what is there in the compressional force? Folding मैंने कहा, and reverse faulting. How it is? How it is coming like this? Let us see now. This is a continental block, let us say, a huge block of land mass. It is affected by compressional force from both sides. It is affected by compressional force from both sides. Now what will happen? There are two possibilities. If the rock strata will get squeezed, there is a possibility that these rock strata may get folded like this. And in this case, this is anticline, syncline, anticline. Likewise, you have this type, the rock strata will get folded. Folding is there. This is called folding. This is the folding. Or you can have another one as another possibility, faulting. If the rock strata is not flexible, there is a possibility of faulting. There is a possibility of faulting. In case of faulting, what will happen? You see, in case of faulting, what will happen? It will develop crack here. It will move like this. There is a possibility that this rock strata may rise up to this level. Because of more and more pressure, this may goes up. Because of more and more pressure, it will break and it may goes up. The rock strata may go up. This block will move upward here because of more and more pressure. There is a possibility, if more pressure is there, this will break and it will move up, and this leads to formation of a different landform here, and this is here is called as the rift valley or graben or rift valley, and this side you will have same way, this side you have horst or block mountain. Here also horst or block mountain. Horst or block mountain. You have the graben here. This is as the
graben, this is as the host of the block mountain. Graben or the ribbling. These two are present. This type of faulting because of compression is called as reverse faulting. This is called as the reverse faulting. Please remember this. This type of faulting is called as reverse faulting. फोल्डिंग फॉल्टिंग डिफरेंस समझ नहीं आया, चलिए ठीक है अभी कराते हैं। आप folding and faulting you didn't got it, okay, let me do one thing. You take a piece of bread, okay, bread ले लो और just give pressure, ऐसे एक folded strata बन जाएगा। but the same thing, same bread को अभी toast बना लो, then you give pressure, one part will break, another part will move upward and downward, that is folding. Folding में क्या है, if you look at, if you say the folding part, folding is what, when there is strata will be like this, because of pressure it will have like it will have bended strata. ये अगर ऐसे है प्रेशर के वजह से क्या होगा, because of the pressure the strata whatever is there like you will have like lineation, same way में ये प्रेशर से ऐसे रहेंगे, because of pressure anticline and syncline like this you will have. अगर फॉल्टिंग अगर टूट जाता है, आप शीशा ग्लास को लेकर अगर प्रेशर दोगे तो क्या होगा भाई, इफ यू विल टेक ए पीस ऑफ ग्लास एंड गिव प्रेशर, टूट जाएंगे। जब टूट जाएगा तो जहां पे टूटा वो है फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन इज नथिंग बट द क्रैक्स ऑन द अर्थ सरफेस, ओके। दो फॉल्ट लाइन के बीच जो एरिया है नीचे अगर चला गया, इफ इट इज गोज डाउन इट इज ए रिफ्ट वैली, दोनों साइड जो ऊपर उठ गया अगर प्रेशर के वजह से, ये हो गया क्या है, ब्लॉक माउंटेन। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस वी कैन से we have the rift valley of Narmada, Tapi, Damodar, Son, all these have rift valley, okay, and block mountain will have like this, because of compression के वजह से अगर ऐसे फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग होता है रॉक स्ट्रेटा में, ये हो गया फोल्डिंग है, ये यू सी दैट दिस इज द फोल्डेड स्ट्रेटा। अब मैं प्रेशर दूंगा तो ऐसे होगा ना, दिस इज नोन एज एंटीक्लाइन, दिस इज नोन एज सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, फोल्डिंग में होगा ये। फॉल्टिंग डिफरेंट टाइप है। नाउ रिवर्स क्यों बोलते हैं, रिवर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जनरली फोल्डिंग होता है, and this case because of compression if it is there, this is very unique case, this is known as the reverse faulting, reverse faulting, reverse faulting, okay, because folding नहीं होगा faulting होगा, but most commonly if you'll see सबसे common अगर हम इसको ऐसे ड्रैग करते हैं, आप सोचो यहाँ पे, my friend those who asked me, please remember that these are the very fundamental and basic things which we are supposed to know. ये ऐसे होगा block, the block will be like this, it will move, it will have, देखो आप ऐसे parallel faulting, एक crack develop होगा, gradually क्या होगा, this will develop, what it will develop you see here, ये यहां पे अगर ऐसे था ये लाइन, this is the line here,
this part will sink down. ये हो गया फॉल्ट लाइन. ऑल दीज आर फॉल्ट लाइन. फॉल्ट लाइन, ये भी एक हो गया फॉल्ट लाइन. ये हो गया फॉल्ट लाइन. दिस इज ऑल्सो ए फॉल्ट लाइन. आप एक पीस ऑफ ब्रेड ले लो, दोनों साइड पे खींचो, इसे बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे. ये सब फॉल्ट लाइन है. और दो फॉल्ट लाइन आप लो ना, एक पीस ऑफ पेस्ट्री लेके आप दोनों साइड खींचना है, इसे मिडिल में सिंक कर जाएगा. ये हो गया रिफ्ट वैली. द मिडिल सिंकिंग पार्ट इज कॉल्ड द रिफ्ट वैली. इट इज कॉल्ड एज द रिफ्ट वैली. दिस इज what is called as the rift valley. This is called as the rift valley or graben or rift valley. This is known as the block mountain or host. This one is also HORST, host or block mountain. ये एरिया धीरे धीरे करके इरोजन होके ये बन जाएंगे माउंटेन जैसे से ब्लॉक माउंटेन. बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन गिव हियर इन इंडिया इज हियर इज विंध्यान रेंज इज ए ब्लॉक माउंटेन. सातपुरा इज ए block mountain. In between Narmada is a rift valley. Narmada river is a rift valley. It is flowing through a rift valley. Best example is this one. This is because of what? Divergence. So this is called as, normally it will happen normal faulting. Normal faulting का किसको बोलते हैं? जब faulting which normally develop, generally they develop, they are called as normal faulting. The faulting which develops normally or generally is known as normal faulting. Faulting which develops generally or normally is known as normal faulting. Normal faulting का best example मैंने आपको दिया है भाई. In India you are having all these things, you can see that. Can you see? आप ये तो याद हो जाएगा अभी. Is it clear to you, my friends? It generally happens, that's why it is known as normal faulting. Is it clear? रिवर्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये नॉर्मली नहीं होता है. रिवर्स फॉल्ट इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ पे ये भी देखो, एंगल देखो ना, ये कैसा है, इसका एंगल देखो ऐसा है. नॉर्मली क्या होना चाहिए? एंगल ऐसे होना चाहिए. इस पे देखो, दिस विल मूव फास्टर. ये उल्टा है, रिवर्स जा रही है. फॉल्ट लाइन की डायरेक्शन देखो, जनरली क्या है, इस टाइप का है फॉल्ट लाइन. यहाँ पे प्रेशर की वजह से यहाँ पे फॉल्ट लाइन कैसे बनेंगे? ऐसे फॉल्ट लाइन बनेगा. देख रहे हैं आप? ये फॉल्ट लाइन देख रहे हो ना, ऐसे बन रहा है. फॉल्ट लाइन इज फॉर्मिंग इन दिस वे. बट यहाँ पे देखो उसका उल्टा है, बन रहा है फॉल्ट लाइन. कैन यू सी दिस? बिकॉज ये जो अपर पार्ट का जो मटेरियल है ना, इट मूव फास्टर देन द लोअर पार्ट, अपर पार्ट. एंड हियर ऑल्सो द सेम थिंग्स, अपर पार्ट मूव अवे फास्टर देन द लोअर पार्ट. एंड दिस इज normally it will happen because of the tensional force. Normally you will have crack known as faulting. So normal faulting. Generally you will not get it like this. In case of compression, mostly folding is there, and this is very rare case. That's why known as reverse faulting. Are you okay with this? आपको समझ में आया क्या भाई? My friend who asked me this question, you got it?